Hi guys, welcome back. Today we are going to discuss levels of biological organization. We have discussed this topic in the previous grades and we are just going to give the overview of different levels from the basic to the highest level. कि किस तरह हमारे पास एक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी फॉर्म करती है, किस तरह हमारे पास कौन से डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं जो एक रोल प्ले करते हैं टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. So the first thing that we need to understand is there are total of about 92 elements that occurs in nature. नेचर में 92 एलिमेंट्स हैं जो अकर करते हैं एंड आउट ऑफ दीज 16 एलिमेंट्स आर दोज दैट मेक्स अप द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. उन 16 एलिमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल देम एज बायो एलिमेंट्स. बायो वाई? बिकॉज दे आर मेकिंग अप द लिविंग बॉडी, इसीलिए हम उसको बायो एलिमेंट्स बोलते हैं. आउट ऑफ दीज 16, 6 are those that makes up the 99% of the body mass, which are oxygen, carbon, hydrogen, nitrogen, calcium and phosphorus. Body का जो 99% mass होगा that is made up of these 6 bioelements. The rest of the 10 will makes up about the 1% of the total body mass. उसके अंदर डिफरेंट आ जाते हैं हमारे पास. पोटेशियम आ जाता है, सल्फर आ जाता है, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, manganese, zinc, iodine. These are all the bioelements that makes up the 1%. Some of them are traces amount में present है, minute quantity में present, but they play their role in the living body. Living body is not a it is not a simple structure. हमारे पास simple structure नहीं होता है. It is a complex system, complex entity है जिसके अंदर different mechanisms are occurring, डिफरेंट प्रोसेसेस आर अकरिंग. वो किस तरह कर करते हैं, कौन सा लेवल हमारे पास उसके अंदर कौन सा रोल प्ले करता है, ये सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे. वन बाय वन वी आर गोइंग टू डिस्कस ईच लेवल इन डिटेल और उसका क्या रोल है हम लोग वो स्टडी करेंगे. स्टार्टिंग फ्रॉम द लोवेस्ट लेवल दैट इज द एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल. उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल. एटम इज द स्मॉलेस्ट एंड द सिंपलेस्ट यूनिट. सिंपलेस्ट यूनिट है हमारे पास एटम. द वर्ड एटम, ए मीनिंग नॉट, टॉम मीनिंग कट, विच कैन नॉट बी फर्दर कट, जिसको हम लोग और कट ना कर सकते हो, दैट इज नोन एज एटम. उसको हम लोग एटम बोलते हैं. दिस इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल. व्हाट इज एटम मेड अप ऑफ? इट इज मेड अप ऑफ 3 थिंग्स: इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. इनको हम लोग क्या बोलते हैं? These are known as subatomic particles. Yeah? होता क्या है? This is the structure of atom. आप देख सकते हो. These are the orbitals. इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं. सेंटर में हमारे पास न्यूक्लियस है जिसके अंदर हमारे पास प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट. एंड these subatomic particles combine to form an atom. और एटम्स कंबाइन करके क्या बनाते हैं? एलिमेंट्स बनाते हैं. Yeah? So this is the lowest level. Now the second level is the molecular level. जितने भी elements हैं they are not stable जब वो isolated form में होते हैं. When they are in the isolated form they are not stable. वो stable नहीं होते हमारे पास. वो क्या करते हैं? They make up bonds बनाते हैं. Which bonds? Covalent and ionic bonds with each other. Those atoms that are present in the elements, वो हमारे पास जो atoms होंगे वो एक दूसरे के साथ combine करेंगे, वो covalent और ionic bonding बनाएंगे and they will then result in the formation of molecules. वो molecules बनाते हैं. These molecules, these exist in this form. Atoms combine किए हुए with the help of the bonding. और जो बॉन्डिंग हो रही है उस बॉन्डिंग के थ्रू जो है हमारे पास दे आर प्रेजेंट इन द स्टेबलाइज्ड फॉर्म. बेस्ड ऑन डिफरेंट प्रॉपर्टीज दे आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट टाइप्स. वो हमारे पास टाइप्स क्या होती हैं? नाउ बेस्ड ऑन द मॉलिक्यूलर वेट दीज आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स: माइक्रोमॉलिक्यूल एंड मैक्रोमॉलिक्यूल. माइक्रोमॉलिक्यूल एंड मैक्रो मॉलिक्यूल. अब माइक्रो एंड मैक्रो में क्या फर्क?
the word micro, lower molecular weight. Those molecules that have lower molecular weight, like carbon dioxide, water, these are micromolecules. Clear? Whereas macro, those having higher molecular weight, like starch, protein, lipids, these are higher molecular weight molecules. Based on their molecular weight, दो चीज़ों में डिवाइड होते हैं, दो टाइप्स में डिवाइड होते हैं, माइक्रोमोलिक्यूल्स एंड मैक्रोमोलिक्यूल. And enormous numbers of micro and macromolecule combine to form a living body. वो एक living body को generate करेंगे. Now, based on the structure of bonding, they are divided into further two types, which are, वो types हैं हमारे पास organic and inorganic. क्या फर्क होता है दोनों में? ऑर्गेनिक में कार्बन एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं, इनऑर्गेनिक में कार्बन एंड हाइड्रोजन आर नॉट प्रेजेंट टुगेदर, इकट्ठे नहीं प्रेजेंट होंगे. एग्जाम्पल, ग्लूकोज, इनऑर्गेनिक में कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड. Large number of organic compounds are present inside the living body, like nucleotides. Most common nucleotide जो हम लोगों ने पढ़ा है in the grade 9, that is ATP, ADP, AMP. These are all nucleotides. Proteins, amino acids, these are organic molecules, whereas glucose, organic molecule. These are all the things that makes up the living body. Yeah. So this is how the molecule are divided into different types based on the different things. Next to the molecular level, the next level is the organelle and cell level. Remember one thing, हम लोग basic से start कर रहे हैं. Atoms combine to form element, elements combine to form molecules, bioelements makes up the biomolecules. उसके बाद क्या आएगा हमारे पास? बायोमोलिक्यूल्स कंबाइन टू फॉर्म ऑर्गेनेली. ऑर्गेनेली क्या होता है? दीज आर सब सेलुलर स्ट्रक्चर. सेल के अंदर जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं हम उसको क्या बोलते हैं? हम उनको बोलते हैं ऑर्गेनेली. नंबर ऑफ ऑर्गेनेलीज आर देयर. देयर इज डिवीजन ऑफ लेबर. इफ यू रिमेंबर, डिवीजन ऑफ लेबर प्रेजेंट है हमारे पास ऑर्गेनेली के अंदर, सेल के अंदर. डिवीजन ऑफ लेबर का क्या मतलब होता है? ऑब्वियसली दीज ऑर्गेनेलीज विल कंबाइन और वो एक पूरा सेल बनाएंगे. हर ऑर्गेनेली जो सेल के अंदर प्रेजेंट होगा वो अपना अपना फंक्शन कर रहा हो. फॉर एग्जाम्पल दिस न्यूक्लियस, क्या फंक्शन होता है न्यूक्लियस का? इट कंटेन्स द जेनेटिक मटीरियल, क्रोमोसोम्स, इट कैरीज द जेनेटिक मटीरियल, और जो इनहेरिटेंस का जो रोल होता है वो सारा प्ले करता है. ठीक है. सिमिलरली वैक्यूल, इट्स अ स्टोरेज कंटेनर ऑफ द सेल. वाटर को स्टोर करेगा, डिफरेंट फूड पार्टिकल्स को स्टोर करेगा, वेस्ट मटेरियल को करेगा. क्लियर? सो एवरी सिंगल ऑर्गेनेली प्लेज इट्स रोल. माइटोकॉन्ड्रिया, एनर्जी प्रोडक्शन, एनर्जी हाउस ऑफ द सेल. राइबोसोम्स, प्रोटीन प्रोडक्शन में काम आते हैं. So these are all the roles that are done by the organelle, and these organelle will combine to form a cell. Based on the number of cell, there are two types of cells that are present. There are two types of organisms that are present: unicellular organism, multicellular organism. Yeah, uni, single cell. जितने भी हमारे पास फंक्शन होंगे इन दीज ऑर्गेनिज्म विल बी परफॉर्म बाय दिस सिंगल सेल. ये एक सिंगल सेल ही वो परफॉर्म करेगा सारे के सारे फंक्शन. वेयर एज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कंसिस्टिंग ऑफ मिलियंस ऑफ सेल, ऑर्गेनाइज्ड एंड कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है इसके अंदर, और ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स आर देयर, टिश्यूज आर देयर, एंड दीज मेक अप द कंप्लीट बॉडी. लाइक प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, और दीज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म विल परफॉर्म द स्पेशलाइज्ड फंक्शंस. उनके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं. सो बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सेल्स दे आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर. नाउ बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ सेल दो तरह के ऑर्गेनिजम्स आते हैं, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट. प्रोकैरियोट्स दैट हैव प्रोकैरियोटिक सेल्स, यूकैरियोट्स दैट हैव यूकैरियोटिक सेल. क्या डिफरेंस होता है दोनों में? प्रोकैरियोटिक सेल्स, रिमेंबर वन थिंग, दोनों के अंदर सेल मेम्ब्रेन होगी.
दोनों में सेल मेम्ब्रेन है, दोनों टाइप की सेल्स में हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है. द फंक्शन इज इन द ऑर्गेनेली. प्रोकैरियोट में लेस नंबर होते हैं, लेस नंबर ऑफ ऑर्गेनेलीज आर देयर इन दी प्रोकैरियोट्स. प्रोकैरियोट्स के अंदर लेस नंबर ऑफ ऑर्गेनेलीज, वेयर एज इन यूकैरियोट्स membrane bounded large number of organelles are there. This is the major difference. इनके अंदर certain organelles हैं prokaryotic cell में, but they are not membrane bounded. Whereas in eukaryotic cell, large number of membrane bounded organelles are there. So they perform their function. There is a division of labor in the eukaryotic cell. Yeah. So this is how the complete function or the organelle and the cell level are performing their role. Now the next level is the tissue level. किसमें अकर करता है ये tissue level? This is present in the multicellular organisms. Tissue होता क्या है? Similar cells जब वो combine करते हैं, they form groups of bundles and sheets जो के कहलाते हैं टिश्यूज, और ये सिमिलर सेल्स होंगे, दे परफॉर्म द सिमिलर फंक्शन, जो टिश्यू का एक सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करेंगे. क्लियर? तो सिमिलर सेल्स कंबाइन करते हैं, ग्रुप्स ऑफ टिश्यूज बनाते हैं, बंडल्स और शीट्स बनाते हैं, विच आर नोन एज टिश्यूज, और वो टिश्यूज जो है एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं बिकॉज ऑफ दोज cells. Number of different types of tissues are there in animals and plants. If we talk about animal tissues, epithelial tissue is there, that is covering the skin. It is responsible for protection, absorption, secretion, sensation के लिए use होता है. Connective tissue is there, support provide करता है, binding provide करता है to different organs, substances की transport में, immune system के में role play करता है. Muscular tissues, movement and locomotion के लिए use होता है. Nervous tissues, transmission of nerve impulses, coordination of brain with body, body to brain, सारे organs की coordination में nervous tissue role play करते हैं. These are the animal tissues. Whereas when we talk about plant tissues, xylem and phloem, vascular tissues, which are known as vascular. Xylem is responsible for the transport of water. Phloem is responsible for the transport of food. These are the major tissues that are present in plant. Ground tissues, support provide करते हैं. Dermal tissues that are present on the epidermal layer, protection provide करते हैं. So these are the different tissues that are present in the multicellular organisms, or they play their role. I will conclude this topic now. We have discussed 4 levels, starting from atomic and subatomic level. Then we moved on to the molecular level, then organelle and cell level, and the last one was the tissue level. I hope everything is understood. If you have got any confusion, if you have got any question or any suggestion, let me know in the comment section. Would love to hear back from you. And do subscribe to my channel, like it, share it, and follow me on Instagram. Till next time, stay safe. Bye bye.